हम ब्रह्मास्मि उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. Aham Brahma Asmi. I'm the creator. This is exactly what Vijay Shekhar Sharma, the Paytm founder, told me when I met him last at the Startup 20 Summit in Gurugram. Yes, this FinTech visionary believes that all entrepreneurs are the creator. And he is the FinTech Brahma of India. He is one of the biggest tech entrepreneurs and is also known as multi-millionaire business magnate. But even Brahma got into trouble. Yes, फिलहाल अपने वर्ल्ड फेमस फिनटेक स्टार्टअप पेटीएम में कुछ कंप्लायंस इश्यूज के चलते विजय शेखर शर्मा एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं. एंड जस्ट टू गिव यू अ क्विक व्यू ऑफ द पेटीएम इशू, last Wednesday on January 31st, the RBI imposed restrictions on Paytm Payments Bank, prohibiting the acceptance of deposits or credit transactions, including top-ups in customer accounts or associated prepaid instruments such as wallets and fastags. You can know more about this issue in the video link given in the description, because in this video, I will only talk about why Vijay Shekhar Sharma is the Shahenshah of Indian FinTech. तो चलिए जानते हैं विजय शेखर शर्मा है कौन, कैसे उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत की. Born in 1978, Vijay Shekhar Sharma hails from Aligarh, Uttar Pradesh. He did his schooling from Hardwaganj, a small town near Aligarh. He was a child prodigy, beginning his college life at just the age of 15. He graduated as an engineer just at the age of 19 with a B.Tech degree. In 1997, while in college, he started the website indiasite.net and sold it 2 years later for $1 million. 3 years later, in 2000, he started 197 Communications, which is also the parent company of Paytm. In November 2021, Paytm went public, raising $2.5 billion at a valuation of $19 billion, making it India's largest initial public offering at that time. Sharma is also an angel investor who has supported tech startups. Moreover, we can see that he is a dedicated entrepreneur who is in fact known as the Captain Cool among the Indian entrepreneurs. I think more or less all entrepreneurs are the creators of new, creators of something that doesn't exist. So we have heard that Sharma sees startups as the ultimate creators. So where does Paytm stand in this league? So Paytm का तो पर्पस ये था कि हम मोबाइल पेमेंट देश में लाएं एंड जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनकी पास प्रॉब्लम है कि उनको टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिलती, तो किस तरह से उनको सॉल्व करें. मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के कारण मुझे समझ में नहीं आता था कि उनके लिए कोई बनाता नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी बड़े लोगों के लिए बनती है. विजय शेखर शर्मा इज द पायनियर टेक एंटरप्रेन्योर. जी हाँ, विजय शेखर शर्मा टेक एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखने वाले भारत के वन ऑफ द फर्स्ट स्टार्टअप फाउंडर्स थे. बट इन्होंने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को आज से 24 साल पहले शुरू किया था, जब देश में टेक्नोलॉजी की लहर दूर दूर तक नहीं थी. और पेटीएम 2010 में शुरू हुआ जब टेक्नोलॉजी बहुत ही नेसेंट स्टेज में थी. तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक नॉन टेक एरा में विजय शेखर शर्मा ने टेक एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की. वेल, देखिए, जब जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बिलीफ चाहिए होता है और फेथ चाहिए होता है कि दिस इज व्हाट विल हैपन. In my opinion, when we were starting, it was very clear that smartphone will revolutionize the world that we are seeing, and I was extremely clear that we wanted to play a role in smartphone expansion in the country. And I'd say that payment was my understanding that it will give the biggest impact. So in a country where bank account was a problem, payment was a problem, or things that you want to do those are problem, I think it was a clear winner. Obviously, challenge was convincing the board, convincing the team, convincing the money. I mean, obviously, everything which is called resource was a problem. Well, resources के सिवा एक मेजर चीज जो किसी भी स्टार्टअप के लिए जरूरी है वो है फंडिंग. आज स्टार्टअप्स के लिए बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर्स, वीसी और एंजल फंड्स, गवर्नमेंट स्टार्टअप स्कीम्स और बहुत कुछ अवेलेबल है. But when Paytm started, funding was a major challenge. So how did Vijay Shekhar Sharma manage to crack his initial funding challenges? Let's hear from him. So I'm not the lucky ones who raised a lot of money. मेरा first round of investment 7 साल बाद हुआ मेरी कंपनी स्टार्ट होने के. So 2001 when I started, I did not get any investors, and it took 2007 to get Series A, which means I'm not potent advisor of how to raise capital. और शायद वो टाइम भी ऐसा था जब startup capital was not available. And then we made company which was free cash profit generating.
जब मैंने पेटीएम स्टार्ट किया तब मैंने सीरीज ए रेज करा $200 मिलियन का, सीरीज ए. एंड आई वुड से उसका फिर मेरा जो मॉडल है वो है कि पहले अपना प्रोडक्ट फिट करो, कस्टमर लाओ, and show that you have something which is worthwhile, and then you make a pitch to the investors. They have a lot of appreciation. बीच में obviously हम free money rush में थे. The qualitative easing done by United States meant lot of capital is coming into the world, so it would find places. But now that world has become far more different than, let's say, 2 years back it was. I'd say that now it is an obligation कि आपका product चलता हुआ हो, कुछ customer हो, कुछ business दिख रहा हो, तभी पैसे मिलेंगे अब. ये तो ही पेटीएम की फंडिंग की बात. बट अगर हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें तो आजकल हम अक्सर ही फंडिंग विंटर्स की बात सुनते हैं. बट यू नो व्हाट, दिस ब्रह्मा ऑफ फिनटेक इंडस्ट्री थिंक्स दैट देयर इज नो फंडिंग विंटर्स इन इंडिया. In fact, he believes that India is in its best time for startups. फंडिंग स्ट्रीम में है, इंडिया को तो आइडेंटिफाई कर लिया गया है एज अ डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड. अर्लियर वी वर पार्ट ऑफ अ इमर्जिंग मार्केट कोहॉर्ट, जिसमें ब्रिक्स जैसे आपने सुना होगा, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना माने जाते थे. तो रशिया की प्रॉब्लम हो गई है, चाइना की प्रॉब्लम हो गई है, ब्राज़ील बढ़ा नहीं इतना ज़्यादा. तो मोर और लेस अब फंडिंग फॉर इंडिया इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट फंडिंग फॉर योर कंपनी इज़ वॉट यू शुड बी थिंकिंग. इंडिया में वो मिलेगा एक्सेस कैपिटल का जो ग्लोबली है. यस, सो आई वुड एग्री कि दिस इज नथिंग फॉर फंडिंग विंटर. आई रादर से दैट यू बेटर बी able to be worth to attract capital. Also, we have seen that startups these days are going crazy to get the unicorn status. But do you know, the Paytm founder believes that attaining the unicorn is not a right parameter to gauge the success of a startup. विजय शेखर शर्मा का मानना है कि किसी भी स्टार्टअप की सक्सेस का सबसे बड़ा पैरामीटर है कि उसके कितने कस्टमर्स हैं और वो उन कस्टमर्स को कैसे सर्व करता है. यूनिकॉर्न बनना एक स्टेटस नहीं होता है, उल्टा कितने कस्टमर हैं आपके पास, वो कस्टमर कितना आपको वैल्यू करते हैं, वो स्टेटस होता है. तो नंबर ऑफ यूज़र के हिसाब से देखें, यूनिकॉर्न तो एक मेरे लगता है कि बहुत ही विजिबल KPI लगता है. बट आई वुड रादर से मेकिंग अ बिजनेस. तो 2000 से 2010 में तो कोई यूनिकॉर्न था नहीं, लेकिन सारी कंपनियां तो वही है जो है. Indeed, Paytm is going through a really difficult time, but we cannot deny that Vijay Shekhar Sharma is one of the most successful entrepreneurs, not just in India, but worldwide. It is his vision and dedication that more than 20 million merchants and businesses are powered by Paytm to accept payments digitally. This is because more than 300 million Indians use Paytm to pay at the stores. So how can we end this video without sharing some success tips from this visionary entrepreneur? So here he tells 3 focus areas that an entrepreneur should focus on in his early stages. So the biggest thing is that why are you doing it? क्यों कर रहे हो? ये कर क्यों रहे हो? मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन बहुत ही अनआंसर्ड रह जाता है. समटाइम इट इज़ कॉल्ड कि दिस इज़ द फैशन और फैड और दिस इज़ द नीड, बट अल्टीमेटली इट शुड कम फ्रॉम विद इन. सो आई वुड से व्हाई आर यू डूइंग इट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन विच विल ब्रिंग द नेक्स्ट स्किल विच इज़ कॉल्ड रेजिलेंस, जिसको हम बोलते हैं कि आपको जब हेडविंड्स आएंगे, जब प्रॉब्लम्स आएंगे, तब देन यू विल स्टे बाय दैट. एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट व्हेन यू हैव आंसर्ड व्हाई, how and when and so on will get sorted out. And because you are committed about why you're doing it, you will not feel the problem is the problem. It will seem like okay, I can cross it like this. और अगर आपका why sorted नहीं है तो सब कुछ प्रॉब्लम है. तो ये थी विजय शेखर शर्मा की कहानी, कुछ हमारी और कुछ उनकी जुबानी. To get latest updates about the Paytm issue, stay connected with TICE. You can also follow us on Google News, LinkedIn, Instagram, Twitter and Facebook to get latest updates from the Indian startup world. You can find all the links in the description.